Welcome to this solo leveling journey. I hope I'm visible. Complex number में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है iota, that is four consecutive powers of iota. इसका summation is equal to one of a and b is non-negative. Complex number के दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट, एक है imaginary. When imaginary part is zero, then it will be this is purely imaginary and this is purely real. Algebra of complex number. Idea of wait. Imaginary part of Z2. ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए. क्लियर? ऐसा क्यों है? जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बता देंगे. मैं बस ये हिंट देता हूँ, बाकी आपको कुछ करना है. ओके? Hello, welcome to this solo leveling journey. I hope I am visible and audible also. Okay, so this is a complex number lecture series for IIT JEE Mains and Advanced. Okay, yeah. Actually पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और हम अपलोड करने वाले हैं आज. ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है ये भी ऑलरेडी अपलोडेड था. बस प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा बहुत मिसमैनेज हुआ है, इसीलिए उसको दोबारा रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई एक्चुअली टेक्निकली इसको पहला लेक्चर होना चाहिए था और ये पहले ही डालेंगे, पर या ये लास्ट में लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि पहले पूरा लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. ओके, तो एक ही साथ पूरा सीरीज अपलोड करेंगे. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, टेक्निकली फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक्चुअली. ओके, so at first we will cover parts of iota in the complex numbers in the same like what we do in real plane like x axis and y axis. It will also be the same, but the change is x axis को हम real axis बोलेंगे and y axis को हम imaginary axis बोलेंगे in this case. Okay, and then it will be called as complex plane or argand plane. I hope it's clear. Okay, complex number में एक चीज बहुत ही important है वो है iota, that is I. तो सबसे पहले हम इसका powers के बारे में बात करेंगे. So yeah, iota is equal to actually square root of -1. Now square it, you will get I square is equal to -1. You have to remember this one. Okay, you have to use this one in different kind of questions. Now I cube is equal to -1 into I, that is minus iota. This is I cube. Okay, now इसको further स्क्वायर करेंगे, you will get I4 is equal to 1. You have to use this to reduce the powers of iota in different questions. Okay, like for an example, like in a question if you need to find I to the power 100, then you just need to use these these four values of iota. I to the power 4 to the power 25 is equal to 1 to the power 25 is equal to 1, simply. Okay, in the same way I to the power 3001, just सबसे पहले 4 से डिवाइड करो. I to the power 4 4 से डिवाइड करेंगे, but you will get 750 I guess. 7 2 0 4 5 0 plus 1, right? That is I to the power 1. This is gonna 1 and this is I simply. Okay, so this is actually iota. I hope up to this it's clear. It's simply you have to reduce the powers of iota in a question. Directly ऐसा कुछ नहीं आता है. One thing here you should remember, point to be noted, that the four consecutive powers of iota, that is I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3, the third. So these the four consecutive powers of iota, इसका summation is equal to 0. कैसे 0 होते हैं हम देख रहे हैं कि sum of 4 consecutive powers of iota is 0 simply. Okay,
What does it mean actually? It means I to the power n plus I to the power n plus 1 plus I to the power n plus 2 plus I to the power n plus 3. You will find it is equal to 0. कैसे हो रही है? Simply find, simply calculate it. I to the power n कॉमन लेते हो, सबसे पहले 1 plus I square plus I cube, right? What do you get here from? I to the power n 1 plus I square is equal to simply minus 1. I cube is also simply minus I. So this is I to the power n into 0 is equal to 0. I hope you got it. Now n की जगह कुछ भी हो सकता है, like I to the power 17 plus I to the power 18 plus I to the power 19 plus I to the power 20. The summation of these four will also equal to 0. This is what it said. Okay? Yes. Now कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, इसको खास बातें की तरह याद रखो. हम कुछ बड़े बड़े टीचर ऐसे करके लिखते हैं, तो हम भी सोचे यही सही है. ओके, सो कुछ खास बातें, जैसे हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 etc. ओके, एंड होल नंबर जस्ट 0 ऐड करो. होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर. इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे बड़ा लार्ज ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर जिसमें है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है. तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं. फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर. इंटीजर इज I, or sometimes it's noted like by Z also. Integer. And then integer is a subset of real number. Real number is a subset of complex number. C. complex number सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ नंबर है जिसमें सारे नंबर एक साथ समाया हुआ है. ओके, यस. दूसरा पॉइंट, जीरो जो है इट्स प्योरली रियल. जीरो जो नंबर है वी विल कॉल इट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी. जीरो सबके लिख के बाहर है. ओके, प्योरली इमेजिनरी. तो जीरो को हम लोग ना रियल बोल पाएंगे प्रॉपरली ना प्योरली, नहीं, मतलब जीरो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है. ओके, तो थर्ड पॉइंट इज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. ओके, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ a into square root of b is equal to root ab, but it's in the case of real number. But in complex number it's slightly different, and what is that? It's important here actually. So root of a square root of b is equal to square root of b. ये तभी होगा, तभी हो सकता है एटलीस्ट one of them means one of a and b is non-negative. is non-negative. कैसे? ओके, रूट a into root b is equal to root ab तभी हो सकता है जब one of them is non-negative, मतलब positive. Like we know root 3 into root 4 is equal to root 12. Right? Both are non-negative. That's why it's okay, no issues. Now, second one is root of minus 3 into root of 4 is equal to root of minus 12. इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी हो सकता है because one of them, that is 4, is non-negative, that's positive. Okay, now in the third case, which is important, minus 3 into minus 4, you cannot write it plus 12. Okay, you cannot write it. So what you need to write is simply root of minus 3. अब root of plus 12 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि minus minus plus into 3 into 4 12 होता है. ऐसे क्यों नहीं लिख सकते डायरेक्ट? Simply
You know that minus 1 into 3 into minus 1 into 4, right? Now minus 1 की वैल्यू क्या है? That is I into root 3 into I into root 4. That is equal to I square into root 12 is equal to minus root 12. तो एक ही चीज़ का दो वैल्यू नहीं हो सकता, एक minus 12 और एक plus 12. Okay, so this method is wrong and this is true. Okay, so root A into root B will be equal to root AB. ये तभी हो सकता है जब one of them, at least one of them, is non-negative. Okay, I hope it's clear. Fourth point, in a real number set, we know that x square plus y square is equal to 0. अगर ऐसा होता है, we simply write that x is equal to 0 or y is equal to 0 and y equal to 0, right? We simply write it. But in the case of real number, but in complex number, if z1 square plus z2 square is equal to 0, if this 0, it doesn't imply that z1 is equal to 0 or z2 is equal to 0. Okay, it doesn't imply. क्यों? Like मान लेते हैं z1 is equal to 1 and z2 is equal to I. Okay, yes, z1 is equal to 1. 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 plus 0 है, हम बताएंगे अभी डॉट वाले. Every real number, every number is in complex form. Okay, every number complex number होता है, उसी को कैटेगराइज किया गया natural number, real number, integer, इन सारी चीज़ों में. Okay, now z square is z1 square is plus z2 square is equal to 1 plus I square. I square is minus 1, that is 0. Okay, so z1 square plus z2 square is 0, but individually 0 नहीं होगा. Okay, ये केवल रियल नंबर के सेट में होगा, पर इमेजिनरी केस में ऐसा नहीं होगा. You should remember it. Yes, you should remember it. Okay, yeah. Okay. Okay, now discuss about the complex number. Actually, z is a complex number. Complex number को हम लोग normally z से denote करेंगे. z is equal to a plus I b. एक complex number के दो पार्ट होता है, एक real part, एक है imaginary part. Okay, real part को हम लोग x axis में plot करेंगे. Imaginary part that is I into b. I मतलब imaginary. Okay, वो b वाला portion को हम लोग y axis में plot करेंगे, तो इसको argand plane बोलेंगे. Okay, now z is equal to a plus ib, जिसमें a and b this both belongs to real. Okay, z is equal to a plus ib, दो पार्ट है, एक रियल पार्ट that is a, इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. ओके, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, बट इंडिविजुअली दे बोथ a and b belongs to real. जब b के साथ I अटैच्ड होता है, that is a plus I dot b, then it becomes imaginary. Okay, I hope it's clear. Like for example, 3 plus 5i, z is equal to, this is a complex number, 3 plus 5i, where 3 is the real portion and 5 is the imaginary portion. Okay, I hope it's clear. They both belongs to real, right? Real number set, 3 and 5 both. But जब I attached होता है, then it's a complex number और imaginary number. Okay, now 2-3 केस हैं यहाँ पे आपको याद रखनी है. इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके. When a is equal to 0, that means real part is 0, but only left is I dot b, that is imaginary portion. Then it will be called as fully or completely imaginary. Okay, that's purely imaginary number when real part is 0. In the same case, when imaginary part is 0, then it will be called as purely real. Okay, like for real number
3, 5, 10. In this case, imaginary part is 0. Okay? Yes. So, for purely real and purely imaginary, and for purely imaginary, purely real के केस में imaginary portion, that is b equal to 0. I hope it's clear. And in this case, z is equal to simply a plus I dot 0 is equal to a. Okay? So, for purely real, b is equal to 0, that is z is equal to a. And for purely imaginary, a should be equal to 0. That is real part of z is 0. Simply z is equal to I dot the real portion. Okay? That is z is equal to 0 plus I dot b, that is I dot b. This is it. This is purely imaginary and this is purely real. And we have already noted down that 0 is neither 0 is purely real as well as purely imaginary. Okay? 0 is exception case. Now we will heading towards the algebra of complex number. Like you have already done, like in the case of vectors. Vectors is different from the real numbers. That's why vectors का एक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. That's why उसका जो summation, subtraction, multiplication, division, its cross, dot, इन सब का अलग अलग मेथड है. In the same way, complex number is different as compared to real numbers. That's why it has its own method of algebra, like the summation, subtraction, okay, multiplication, division, yeah, etc. So algebra of complex number. Algebra of complex number. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे actually? First, addition. First, addition पढ़ेंगे हम लोग. Okay? Like z1 is equal to a1 plus b1 and z2 is equal to a2 plus b2. दोनों z को कैसे जोड़ेंगे? You have to just add real part of z1 and z2 and then add imaginary part of z1 and z2. Okay? Like z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. Okay? इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है पर हाँ you have to know it. Now z1 plus z2 is equal to, just simply real part को जोड़ दो plus I into imaginary part को जोड़ दो addition में. Okay, so real part of both z1 and z2 plus I plus of imaginary part of both. Okay, ये रियल पोर्शन है इसका z1 का एंड z2 का रियल पोर्शन से, इन दोनों को जोड़ो एंड देन now the case of b, subtraction भी सेम ही है, like z1 minus z2. okay, z1 minus z2, पहले का रियल पार्ट माइनस दोनों का रियल पार्ट का डिफरेंस प्लस i into b minus d. Okay, I hope it's clear. I guess z1 is equal to a plus ib, z2 is equal to c plus id. z1 minus z2, सबसे पहले z1 के वैल्यू लिखो ही थे z1 का लिखो a plus ib minus of c plus id, right? Yes. तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का कैलकुलेशन होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का कैलकुलेशन. तो a minus c plus I into b minus d. Okay, I hope it's done. Simply एक अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, z1 is equal to 3 plus 5i and z2 is equal to 7 plus 10. Now z1 plus z2, what will be that? Simple. Real part plus real part
जोड़ो 7 + 3 दैट इज 10 प्लस I इंटू 5 + 10 दैट्स 15. ओके, आज हम राइट साइड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Z1 + Z2 इज दिस. नाउ अगर Z2 माइनस Z1 किया जाए इसमें, दैट मीन्स 7 + 10I माइनस 3 माइनस 5I, राइट. यस, तो सब्ट्रैक्शन करो सिंपली. 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5I. Z1 माइनस Z2 भी आपके लिए कर रहे हैं खुद. तो ये सब्ट्रैक्शन था. नाउ मल्टीप्लिकेशन. सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, multiplication of complex number. How it's done? It's simply like a plus ib into c plus id is equal. Multiplication is simply term by term multiplied करना है आपको. Like सबसे पहले a into c then a into id. Okay, plus of simple जैसे multiply करते हैं a plus b into c plus d. Okay, वैसे सबसे पहले ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस ए इंटू आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई बी इंटू आई डी, दैट इज आई स्क्वायर बी डी. ओके, यस. नाउ यू नो दैट आई स्क्वायर मीन्स -1, तो ए पे -1 पुट करो, तो -1 पुट करेंगे तो माइनस बी डी होगा, उसको एक साइड में लेगा माइनस बी डी प्लस आई वाला पोर्शन को अलग रखो, रियल वाला पोर्शन को अलग रखो और इमेजिनरी वाला पोर्शन को अलग रखो. आई स्क्वायर बी डी रियल पोर्शन इसलिए है क्योंकि आई स्क्वायर की जगह अगर हम लोग -1 पुट करेंगे देन इट विल बी माइनस बी डी एंड माइनस बी डी इज दिस इज एक्चुअली माइनस बी डी. आई स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ओके, तो माइनस बी डी ये रियल पोर्शन है एंड आई इंटू ए डी प्लस बी सी, ये कंबाइंड इसका रियल पोर्शन ए सी माइनस बी डी एंड इमेजिनरी पोर्शन ए डी प्लस बी सी. ओके, आई होप इट्स क्लियर. टर्म बाय टर्म सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ डी डिवीजन. डिवीजन में एक ही चीज आपको जो याद रखना है वो है कि जब भी नीचे आई रहेगा लाइक ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी, ऐसे फॉर्मेट में रहेगा. हम नहीं चाहते कि आई नीचे रहे. ओके, सो वी शुड जस्ट रिमूव आई फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड फॉर दैट वी विल डू, इसका कॉन्जुगेट होता है सी प्लस आई डी, इसका कॉन्जुगेट सी माइनस आई डी विच इज द मिरर इमेज ऑफ सी प्लस आई डी. ओके, वी विल डू दिस शॉर्टली, डोंट वरी. सो ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी. ओह वेट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एक्चुअली खाना दे आया था तो इसीलिए नॉक करके छोड़ के जाता है. दैट्स व्हाई इट वाज लिटिल लाउड साउंड. ओके, नाउ ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी. ओके, जब भी नीचे आई रहेगा यू हैव टू रिमूव इट एंड हाउ वी विल रिमूव इट, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. ओके, सो ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, उसका कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. और कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट जिसके साथ आई लगा हुआ है इट मीन्स इमेजिनरी पोर्शन, उससे बस एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है. एक सी प्लस आई डी, उसका कॉन्जुगेट होगा सी माइनस आई डी. अगर यहीं पे माइनस सी माइनस आई डी होता, इसका कॉन्जुगेट क्या होता, जस्ट आई के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसी के साथ -1 मल्टीप्लाई करना हुआ, तो माइनस सी प्लस आई डी, एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो माइनस से प्लस आई डी होगा. ओके, आई होप इट्स क्लियर. अगर यहीं पे होता आई डी, इसके साथ इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सिंपली इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस सी माइनस आई डी. ओके, क्या ओके, नाउ सी माइनस आई डी. अब आई डी सी माइनस आई डी से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं. नाउ ये एक फॉर्मूला है लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ऊपर में तो सेम चीज रहेगा,
नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर, राइट। नाउ आई डी स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर डी स्क्वायर मीन्स माइनस आई डी स्क्वायर, राइट। यस, सो माइनस डी स्क्वायर ए से मिलेगा और इसके साथ एक और माइनस मल्टीप्लाइड है, सो इट विल प्रोवाइड यू प्लस डी स्क्वायर। ओके, सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू विल गेट। तो सिंपली हम लोग इसके बाद वही लिखेंगे कि ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आई होप यू got it. This is how addition, subtraction, multiplication and division are done in complex number. Record तो चालू किया? Yes. Okay. So इसके बाद हम लोग अलजेब्रा में एक और चीज जो याद रखना है, इक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 are said to be equal if and only if the real portion of that two complex number should be equal and also the imaginary portion are also equal, like equality. Equality of two complex number. Okay, Z1 and Z2 are said to be equal. Okay, said to be equal if okay Z1 is equal to ऐसे लिख देते हैं, the real part of Z1 is equal to real part of Z2. Okay, RE of Z1 means real part of Z1, RE of Z2 means real part of Z2. Okay, and also imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2. ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए. One more case, just you need to remember, okay, that real part of Z1, imaginary part of Z1, उसके बाद real part of Z2, imaginary part of Z2, this all belongs to real. इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना है. Like Z1 मान लेते हैं कि A plus IB, Z2 मान लेते हैं C plus ID. ये दोनों Z1 is equal to Z2 तब होगा जब A is equal to C and B is equal to D. और ये चीज़ हम तभी बोल सकते हैं जब A, B, C, D ये चारों चीज़ रियल पार्ट में रियल है, ऐसा दिया हुआ है, तभी हम लोग कर सकते हैं ये चीज़. ओके, वरना नहीं कर सकते. आई होप इट्स क्लियर. ऐसा क्यों है, जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब बता देंगे. ओके, वन क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर विथ मी. लेट -2 -1/3i whole cube is equal to x plus iy by 27, whereas x comma y belongs to real, then y minus x is equal to how much? ओके, ये आपको होमवर्क करना है. पहला क्वेश्चन ही होमवर्क दिया हुआ है. या ये इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. लाइक फर्स्ट यू हैव टू जस्ट एक्सपैंड द लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग क्यूब वाला फार्मूला. एक क्यूब जो भी है, ये क्यूब वाला फार्मूला आपको यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लेके आए. ओके, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस आप लोग करें, उसके बाद उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेशंस के बाद, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, ओके, उसके बाद उसका पावर बढ़ाने के बाद जो भी चीज़ करें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लास्ट में रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद आप x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में इसको लिखोगे. रियल पार्ट को एक साइड में प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में लिखेंगे. उसके बाद
अच्छा एक्स वाई दिया हुआ है राइट, तो इसको ए बी मान लेता हूँ। ओके, एक्स बाई 27 प्लस वाई इंटू वाई बाई 27. Okay, x and y are real, so this will also be real. Okay, now equality between two complex number. These are two complex number, right? Yes, and this is also real, this is also real. That's why we can use the equality वाला जो हमने लिखा है. Okay, so a is equal to x by 27 and b is equal to y by 27. a से a and b का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद इसको सिंपली माइनस करना है. Okay, in this case why ABCD should be belongs to real? ऐसा क्यों होनी चाहिए ABCD? ये क्वेश्चन आ भी सकता है. लाइक मान लेते हैं कि ऐसे केस में Z2 के केस में C प्लस आई इंटू डी के जगह B प्लस आई डी. दैट मीन्स itself is imaginary, right? दैट्स व्हाई सबसे पहले हमें रियल पार्ट को अलग करना है. हो सकता है ना इसके अंदर छुपा हुआ रियल पोर्शन. ओके, इसके अंदर रियल पोर्शन छुपा हो सकता है. अगर मान लो कि बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बी के अंदर भी रियल पोर्शन छुपा हो सकता है. तो जब होल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन, तब वो सी नहीं रहेगा. ओके, तब वो सी नहीं रहेगा होल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन. दैट्स व्हाई. और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी में द फुल complete real portion between these two will be equal and the whole complete imaginary portion should be equal to equal. Okay, that's why हो सकता है कि hidden छुपा हो real portion या imaginary portion. That's why it's important that this thing should be given. After that you will do this. Okay, I hope up to this is clear. इसके बाद हम square root of a complex number पढ़ेंगे. Okay. Now question number 2, that was it means 2020 में आया था शायद. Let a is equal to theta, where theta belongs to minus pi by 2 to pi, such that 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely imaginary. Then sum of the elements in a, मतलब थीटा का जितना भी वैल्यू मिलेगा, जैसे मान लो 2 वैल्यू मिला है इस रेंज में, उन दोनों को जोड़ना है. ओके, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, 2 एलिमेंट्स है ए में मान लेते हैं, उस रेंज में तो 2 एलिमेंट को जोड़ना है. ओके, नाउ हियर one thing you it's given that is purely imaginary. For purely imaginary, what do we know? For purely imaginary, the real portion is equal to 0, right? And for purely real, imaginary portion is 0. I hope it's clear. Now 3 plus 2i sin theta, मैं बस हिंट देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है. ओके, हाँ, कैलकुलेशन खुद से ही करना है. 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta. ओके, we know that जब नीचे i आएगा तो हम उसको जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i sin theta होगा, 1 plus 2i sin theta. Same thing, 1 plus 2i sin theta. Okay, I hope up to this is clear. Now, any complex number can be reduced into a plus ib form. It's also a complex number. Complex number के कोई भी ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब एक साथ किया हुआ है, इसको अगर जब सिंप्लीफाई करोगे you will find a plus ib, right? a प्लस आई इंटू बी. पूरे का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे, नीचे से आई हट जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पोर्शन बाई ए स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई समथिंग बाई ए स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ऐसा मिलेगा. तो ये एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा. एंड फॉर प्योरली इमेजिनरी द रियल पोर्शन दैट इज ए शुड बी इक्वल टू 0. Okay, and what you will get actually, sin theta is equal to, from by doing this you will get sin theta is equal to plus minus root 3 by 2. That is sin square theta is equal to 3 by 4 you will get. So sin theta is equal to plus minus root 3 by 2. And we know that हमारे यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है?
minus pi by 2. This is minus pi by 2. This is 0. This is pi by 2 and this is pi. So range is given from here to there. Okay. Between this sin थीटा की 3 वैल्यू मिलेगा जिसका वैल्यू √3/2 होता है। माइनस √3/2 माइनस π/3 में मिलता है, प्लस में प्लस π/3 और 2π/3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, दैट्स वाई। तो ए के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स होगा। एक एलिमेंट थीटा की 3 वैल्यू मिलेगा, राइट। एक वैल्यू माइनस π/3, एक वैल्यू प्लस π/3, एक वैल्यू 2π/3। और आपको बोला गया कि ए के जितना एलिमेंट्स है बिटवीन दिस रेंज वी हैव टू जस्ट सम इट, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन है। तीनों को ऐड करेंगे तो 2π/3 मिलेगा, नलिफाई होगा, आंसर इज 3। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच वाज इन मेंस 2016, एक्चुअली ये वाला मेंस 2019 में आया था। तो मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी कभी, एडवांस में शायद नहीं आएगा, आया भी तब भी इसके ऊपर पूरा बेस करके नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, 3 स्टेटमेंट के बीच में एक स्टेटमेंट ऐसा आ गया, मान लेते हैं। ओके, फॉर दिस आल्सो द सेम क्वेश्चन, यू विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस with conjugate in the denominator, then convert it a plus ib form and you will find a and b. For purely imaginary, a should be equal to 0. From there also you will get the value of theta and just match with this form. इनमें से कोई एक होगा जो थीटा के साथ मैच करेगा, कोई आंसर है। ये होमवर्क है, यहीं पे आपको टेस्ट करना है, टेस्ट योर प्रोग्रेस है। ओके, ना इसके बाद हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंक खत्म हो गया।